of the ribs and the buttocks. It can sometimes extend beyond the buttock level or above the rib level into the upper or the thighs pain. So this is so far a very common terminology or a common problems seen, and it can last for a short duration. Like in case we say an acute time, maybe lesser than 2 weeks to 3 weeks, and sometimes little longer, which is termed as a subacute, or a little very longer time. Sometimes we see it in a chronic form. I will read or discuss this topic even in a Hindi language along with this English to club together so that most of the audience can gain knowledge most of out of it. तो ये जो लोअर बैक पेन है वो कमर जो कि हमारे रिब्स के निचले वाले हिस्से से बटक जो हमारे बैठने की जगह है वहां तक की जगह में ये दर्द होता है और जो कुछ समय के लिए रह सकता है, कुछ ज्यादा या फिर लाइफ टाइम या लॉन्गर टर्म तक भी रहता है, जिसको हम अक्यूट, सब अक्यूट और क्रॉनिक पेन बोलते हैं। ये लोअर बैक पेन से क्यों इसकी जांच करनी चाहिए या फिर क्यों इसके बारे में पता रहना चाहिए हम लोगों को। लोअर बैक पेन 90% लोगों में हम देखते हैं कि दिस लोअर बैक पेन इज यूजुअली नॉन स्पेसिफिक, और सिर्फ 10% या 5 to 10% लोगों में ये लोअर बैक पेन बहुत ही स्पेसिफिक रीजंस के कारण होता है। हमारे क्लिनिक में जब हम देखते हैं 100 में से 80 से 90 पेशेंट्स या क्लाइंट्स जो दिखते हैं उनमें लोअर बैक पेन के ज्यादातर कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज रीजन नहीं मिलते हैं। कुछ 10% लोगों में मिलते हैं जिसमें हम फ्रैक्चर्स देखते हैं, ट्यूमर्स देखते हैं, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, स्लिप डिस्क और बाकी कुछ रीजंस देखते हैं जैसे इन्फेक्शंस। तो ये 90% लोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्योर एंड आउट रीच देम, टेक अवे दीज 90% फ्रॉम दीज अदर 10%, ताकि वो लोग सेफ भी रहे एंड वो लोग प्रोटेक्टेड एंड वर्कहॉलिक रहे, ताकि अपना काम रेगुलरली कर सके और उससे मेंटली अफेक्ट नहीं होए और उनका लाइफस्टाइल अफेक्ट ना हो। बाकी के 10% जो है उनका मेडिकल ट्रीटमेंट और कभी-कभी सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये जो 90% लोअर बैक पेन हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक, उनमें से काफी कुछ मैकेनिकल होता है एंड 30 to 40% रहते हैं जो नॉन मैकेनिकल होते हैं। जब ये नॉन मैकेनिकल कॉज होता है उनमें ना कि मस्कुलेचर, ना कि स्केलेटल या कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं दिखता है हमको। आफ्टर लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, काफी सारी जांचें जैसे एक्सरे, एमआरआई और भी ईएमजी, एचसीवी, काफी सारी जांचें और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद भी हमको पता चलता है कि इनमें 30% लोगों में बैक पेन के कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, कोई रीजन नहीं है। तो उनको हम टैग करते हैं कुछ साइकोसोशियल अनोमलीज या साइकोसोशियल फैक्टर्स और एक फियर अवॉइडेंस। मतलब काफी पेशेंट्स आते हैं जो मेंटली थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं, साइकोसोशियली डिस्टर्ब रहते हैं, उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं या फिर ऑफिस में कुछ दिक्कत होती है, उनके पोस्चरल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके स्टैंडिंग का पोस्चर, उनके सोने के पोस्चर, उनका रहना लाइफस्टाइल जो है वो बहुत जनों में अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण वो लैंड अप होते हैं लोअर बैक पेन और बाकी के जॉइंट्स पेन के साथ। अभी जो मैकेनिकल पेन होता है वो मैकेनिकल पेन ज्यादातर होता है मस्कुलर पेन, जो हम टर्म करते हैं मस्कुलर पेन, और वो होता है बहुत 50% लोगों में मूवमेंट इंपेयरमेंट की वजह से, जहां पर हमारा जो मूवमेंट होता है बैक का, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, साइडवेज बेंडिंग या फिर स्टेयरकेस क्लाइंबिंग, ये जो मूवमेंट्स होता है वो उनका डायरेक्शंस और लोअर मूवमेंट, मतलब कि काफी सारे लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनमें मूवमेंट्स काफी रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो ये हाइपोमोबिलिटी पेनफुल होती है। और काफी लोगों में ये जो मूवमेंट इंपेयरमेंट कंट्रोल मैकेनिज्म
बिगड़ जाता है एंड उनका मूवमेंट्स सही ढंग से नहीं होता है, तो वो लैंड अप करते हैं लोअर बैक पेन में, और जो क्रॉनिक बनता जाता है स्लोली। जब हम देखते हैं इंडिया में 48% लाइफ टाइम प्रिवेलेंस है लोअर बैक पेन का, मतलब कोई भी 100 लोगों का डेटा हम ले ले तो उनको लाइफ टाइम में कभी ना कभी लोअर बैक पेन होता है एंड दे आर इनटू द ट्रीटमेंट। मिनिमम एक 40 to 50% लोग ट्रीटमेंट लेते हैं लोअर बैक पेन से उनके लाइफ टाइम में, which is much higher to the global data. Globally, if we see, it is 7.5% of the world population which is affected from the lower back pain, and they suffer because of these back pains. Some basic facts about the lower back pain. 85% of all people, टोटली हम जब देखते हैं 85%, अगर हम जनरल पब्लिक में देखें 85% ऑफ द लोअर बैक पेन को पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की जरूरत लगती है सम और दी अदर टाइम इन लाइफ। भले वो ट्रीटमेंट कोई भी तरह से लेवे, फिजियोथेरापिस्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट और एक्सरसाइजेस और होम्योपैथ, कोई भी ढंग से लेवे, बट 85% अप्रोक्सीमेटली लोअर बैक पेन के लिए ट्रीटमेंट ऑक्यूपाई करते हैं। आउट ऑफ विच रैंकिंग हम देखें हॉस्पिटल एडमिशंस के लिए, तो लोअर बैक पेन is the 5th ranking reason for hospital admissions, which is very higher value, and 3rd most common cause for the surgical procedures. Now it is 2nd most frequent reason for the physician visit. अब लोअर बैक पेन इतनी बुरी बीमारी नहीं है या फिर इतनी डेंजरस बीमारी नहीं है जैसे हम देखते हैं हार्ट अटैक्स या स्ट्रोक या और जो इन्फेक्शंस होते हैं जो काफी कॉमन भी होते हैं, एंड उनमें तकलीफ या प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं, पर लोअर बैक पेन वैसा नहीं है। लोअर बैक पेन इज अ सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम जो अपने आप खत्म हो जाती है अगर हमें अवेयरनेस होगी तो, कि वो लोअर बैक पेन कितनी तकलीफ दे सकता है या फिर उसके बारे में कितना रिसर्च करना चाहिए, उसके बारे में कितना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ये सेकंड से वी कैन लोअर इट डाउन ताकि उनके हॉस्पिटल विजिट्स या हॉस्पिटल एडमिशन या सर्जिकल प्रोसीजर्स कम हो सके। जो पॉपुलेशन मोस्टली अफेक्ट होती है लोअर बैक पेन से, वो होती है लिटिल मिडिल एज एंड हायर एज पॉपुलेशन, जिनमें 45 to 65 इयर्स ओल्ड पॉपुलेशन काफी ज्यादा क्वांटिटी में दिखती है, जहां पर विमेन्स आर ऑल्सो मोर लाइकली अफेक्टेड। विमेन्स की जो एज ग्रुप है, विमेन्स आर मोर लाइकली अफेक्टेड इन द पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप। 45 to 50 समवेयर दी मेनोपॉज, और उसके बाद जो उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनके लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, और उनके जो कैल्शियम डेफिशिएंसीज एंड विटामिन डेफिशिएंसीज होते हैं, जिसके कारण विमेन्स में ये ज्यादा पाया जाता है लोअर बैक पेन देन इन मेन। लोअर बैक पेन क्या अफेक्ट करता है हमारे बॉडी में? इट अफेक्ट्स द मोबिलिटी। हमारा जो मूवमेंट्स है, शरीर का जो मूवमेंट है आगे या पीछे बेंड करने का, और साइड ट्विस्टिंग या साइड बेंडिंग, ये सारे मूवमेंट्स अफेक्ट होते हैं, और काफी सारे पेशेंट्स लैंड अप होते हैं कि वो आगे नहीं झुक पाते हैं, उनका मूवमेंट्स एक्टिवली नहीं कर पाते हैं। कोई भी मूवमेंट्स जिसमें वेट लिफ्ट भी करना है तो उनको पेन शुरू हो जाता है। सो वो उनकी फंक्शनल डिसेबिलिटी बन जाता है, और उनका रूटीन जो वर्क रहता है, डेली रूटीन एक्टिविटीज अफेक्ट हो जाती है। एंड ग्रेजुअली ये जो प्रोसेस चलता रहता है लोअर बैक पेन का, फाइनली ये अफेक्ट करता है मूड स्विंग्स पर। तो ग्रेजुअली क्रॉनिक जब होता रहता है ये लोअर बैक पेन, तो ये मूड स्विंग शुरू हो जाता है, जहां पर साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स की शुरुआत होती है। एंड ये जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स शुरू होने के बाद इसकी साइकिल बन जाती है, जहां पर बिकॉज ऑफ डिसऑर्डर लोअर बैक पेन इज इंक्रीज, एंड अगेन फंक्शनल डिसेबिलिटी, अगेन मूड स्विंग्स, एंड दिस साइकिल गोज ऑन, एंड इट अफेक्ट्स द लाइफस्टाइल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ ह्यूज एक्सटेंट। अब हम देखते हैं कुछ कॉजेस जो लोअर बैक पेन को जनरेट करते हैं। ये जो पेन जनरेटर्स है, ये 3 हिस्से में हमारे शरीर में डिवाइडेड है।
मैं मैकेनिकल और फंक्शनल नॉन फंक्शनल लोअर बैक पेन की बात कर रहा हूँ, जिसमें साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स नहीं आते हैं। ये सारे मैकेनिकल लोअर बैक पेन है, जहां पर नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम, वेयर द नर्व्स, जिसके कारण हम बहुत डरे हुए रहते हैं कि कोई नस अगर डैमेज हो गई और सुन पड़ गई या वीक पड़ गई तो शायद हमारा चलना फिरना बंद हो सकता है। तो वो नसों पे कभी कभी कुछ प्रेशर, जैसे स्लिप डिस्क या स्टेनोसिस या कोई फ्रैक्चर्स या इंजरीज के कारण, इन्फेक्शंस के कारण, वो नसों में प्रेशर के कारण वो पेन जनरेट होता है, एंड वो पेन लोअर बैक से कभी कभी नीचे पैरों तक चला जाता है, जिसे हम sciatica बोलते हैं। दूसरा होता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हमारे बोन्स आते हैं, जिन्हें हम वर्टिब्रल बोन्स बोलते हैं, और उनके बीच में कुछ कुशन्स होते हैं जो हमारा शॉक एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करते हैं, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, जहां पर हमारा मूवमेंट्स होता है आगे बेंडिंग, पीछे बेंडिंग का। सो दिस इज द स्केलेटल सिस्टम, जहां बोन्स एंड सो दिस इज द स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमारे बोन्स और उसके साथ में डिस्क होते हैं, जहां हमारा मूवमेंट्स फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग एंड साइडवेज बेंडिंग, ये सारा मूवमेंट्स हमारा स्पाइन में, लोअर बैक में इस तरह होता है, जो कि काफी ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है। जो ऑर्गेनाइज्ड रहे एंड नेचुरल तरीके से रहे तो ये प्रॉब्लम्स आगे जाके नहीं देगा। एंड दिस इज द नर्वस सिस्टम और द nerve related structures which can be affected because of the pressure from the slip disc or any other injuries from the lower back. तीसरा सिस्टम होता है मस्कुलेचर। ये जो स्पाइन के सिस्टम होते हैं उसके सराउंडिंग सारे मसल्स होते हैं, which controls the potential and strength of the bones and the discs. जब ये मस्कुलेचर अफेक्ट होता है, अब ये मस्कुलेचर अफेक्ट होने के काफी रीजंस होते हैं। या तो हाइपोमोबिलिटी, जिसमें हम मूवमेंट्स ही नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहते हैं, घंटों घंटों बैठ के काम करते हैं, तो उसमें ये मस्कुलेचर अफेक्ट होता है। या फिर एक्सट्रीम्स ऑफ वर्क, जिसमें स्ट्रेन आता है, स्प्रेन आता है, और उसमें ये मस्कुलेचर अफेक्ट होता है, तो वो एक पेन जनरेटर मैकेनिज्म है। अब इसमें ये सारे कारण देखते हैं हम, जब स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पाइनल कैनाल स्टीनोसिस, जिसमें नर्व्स अफेक्ट होती है, बोन्स अफेक्ट होते हैं, स्पाइन का मूवमेंट्स कम हो जाता है, स्लिप डिस्क और रप्चर्ड डिस्क, जिसमें बल्ज होने की वजह से नसें दब जाती है, और उसके कारण हम देखते हैं कि सायटिका का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, लोअर बैक पेन का। अब ये बोन्स में हम बहुत बार देखते हैं एक एज इन फीमेल्स मोर देन मेल्स, एक एज के बाद एक स्ट्रेस फ्रैक्चर डेवलप होता है, जो कि एक बेसिक इंजरी से कुछ बोन्स में फ्रैक्चर डेवलप हो जाता है, उससे उनका चलना फिरना नहीं रुकता है या बंद नहीं होता है, ग्रेजुअली बट पेनफुल मूवमेंट्स होता है, पेन में चलते चले जाते हैं, और उसको रोकना बहुत जरूरी है। एक ऑस्टियोपोरोसिस विच इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम एंड सिवियर प्रॉब्लम, जो हमारी लाइफस्टाइल काफी अफेक्ट कर देता है, एंड बैक पेन के कारण बहुत सारे फंक्शनल डिसेबिलिटीज शुरू हो जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करना जरूरी है, उसको ट्रीट करना जरूरी है। एंड द मसल स्ट्रेन एंड स्प्रेन व्हिच हैपेंस बिकॉज ऑफ द ओवर स्ट्रेनिंग ऑफ द लोअर बैक, एंड मसल पुल्स हैपेंस बिकॉज ऑफ सम एक्सेसिव लोडेड वर्क। नॉन मैकेनिकल डिसीज प्रोसेस लाइक ये किडनी स्टोन्स, ये काफी कॉमन बीमारी देखते हैं हम, जिसमें लोअर बैक और वहां से फ्लैंक्स रीजन में भी पेन शुरू हो जाता है। तो इसको रूल आउट करना जरूरी है कि ये किडनी स्टोन का पेन है या आपका मस्कुलेचर का पेन है या फिर नर्व और बोन्स रिलेटेड पेन है। Heavy lifting, as you see, it strains too much on your lower back and it sprains your muscles and can affect your disc and bones. Trauma, जो सबको पता है कि बैकबोन्स को अफेक्ट कर सकता है, नर्व्स को अफेक्ट कर सकता है, स्प्रेन्स आ सकते हैं। Poor sitting posture, very well known to all the population that poor sitting posture is so common nowadays and it can affect the lifestyle, it can affect with the lower back pain. Frequent bending forward, ये जो bending forward backward is not a bad habit, but जो posture and जो controlled movement होता है, that is very important. How you sit, how you bend, and how much you bend, and how much weight you lift more than your acceptance level, उस पर ध्यान देना जरूरी होता है। आर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव कंडीशन है, जहां पर हमारे ये बोन्स के जॉइंट्स
वो अफेक्ट होते हैं एंड वहां पर एक सेरेशंस या फिर एक एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ डेवलप होता है एंड नॉर्मल कार्टिलेज अफेक्ट होते हैं एंड डिजेनरेट हो जाते हैं एंड वो काफी पेनफुल होते हैं क्योंकि वो आर्थराइटिस में एंड प्लेट के जो पेन जनरेटिंग सिग्नल्स स्टार्ट हो जाते हैं एंड एंड प्लेट पेनफुल तरह से उनमें मूवमेंट्स अफेक्ट हो जाते हैं. Key to proper and effective treatment. The cause of low back pain is a combination of injury and the neural release of inflammatory response. The three systems involved here are first the skeletal system, the bones that make up the structure of the human body. Second, the nerves, which transmit signals to the brain. And third, the muscles, which are attached to the skeletal structure allowing functional movement. Lower back pain is caused by trauma to any or all of these three systems. For example, So, अब हम देखेंगे ये लाइफस्टाइल क्यों अफेक्ट होती है लोअर बैक पेन की वजह से. लाइफस्टाइल इज समथिंग विच वी लिव विद. हम जो जीते हैं, हम जो काम करते हैं, हम जो रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, वर्क करते हैं, उसे हम हमारी लाइफस्टाइल कहते हैं और वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए जस्ट एक छोटी सी बीमारी के कारण, जो कि कोई भी ऑर्गेनाइज या कोई महत्वपूर्ण या कोई बड़ी बीमारी नहीं है. तो उससे हमारा लाइफस्टाइल क्यों अफेक्ट होना चाहिए. और लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं लोअर बैक पेन, वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. अब ये फिजिकल इनएक्टिविटी, जैसे हम यंगस्टर्स में देख रहे हैं कि more than 70 to 80% population have been into the sedentary lifestyle, जैसे continuous sitting work on the screen, continuous computers या continuous books में जो sitting time उनका हो गया है 10 to 12 hours और 8 to 10 hours in a day. जब वो उठते ही नहीं है, continuous 5 to 6 hours they are continuously in front of the screen. तो ना उठने के वजह से जो बैक के मसल्स होते हैं, ये एक स्टिफ होने का कारण उनका इनएक्टिविटी होती है. जब वो हिलेंगे नहीं तो उनके मसल्स काम नहीं करेंगे, उनके मसल्स में जो सर्कुलेशन होना चाहिए वो सर्कुलेशन डेवलप नहीं होता है, तो मसल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं. स्मोकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इग्नोर किया जाता है काफी स्मोकर्स के द्वारा, बिकॉज दिस इज अ हैबिट फॉर्मिंग मैकेनिज्म एंड बिकॉज ऑफ स्मोकिंग हमारे वैस्कुलेचर जो होते हैं, बोन्स एंड मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करते हैं, वो नैरो हो जाते हैं एंड ये माइक्रोवैस्कुलेचर जब बंद हो जाते हैं तो हमारे बोन्स एंड मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता है और वो ब्लड सर्कुलेशन ना पहुंचने की वजह से मसल्स वीक और वीक होते जाते हैं और उनमें स्कारिंग होती जाती है. अब ये स्कारिंग एंड मसल्स वीकनेस के कारण हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं वो काफी अफेक्ट हो जाते हैं एंड स्टिफ हो जाते हैं एंड ग्रेजुअली बोन्स एंड जॉइंट्स में भी आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है. और ये बोन्स जो वर्टिब्रल बॉडीज एंड अदर बोन्स ऑफ द बॉडी है, उनमें ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण वीकनेस डेवलप होती है और ये निकोटिन एंड स्मोकिंग के कारण बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस काफी डेवलप हो जाता है एंड द मस्कुलर वीकनेस आल्सो इंक्रीजेस. इनएडिक्वेट स्लीप, जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो ये मसल्स को रिलैक्स करने का जो टाइम पीरियड होता है, which is somewhere around 7 to 8 hours is the adequate time for the muscles to relax after an effective working or potential working throughout the day. Our body needs an adequate sleep, which is probably around 6 to 8 hours and it is different in different individuals, उनके वर्क पोटेंशियल के हिसाब से. तो ये स्लीप एडिक्वेट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उनके मस्कुलेचर काफी सोर हो जाते हैं एंड वीक हो जाते हैं एंड व्हिच गिव्स लॉट ऑफ increased amount of lower back pain. Weight is another important cause for lower back pain. Obesity is one most important cause where the people are affected with the lower back pain, because ये जो body का structure है, weight है, it is completely loaded and giving the excessive load on the muscles and the discs as well as the joints of the lower back and into the lower limbs. तो ये कंटिन्यूअस लोडिंग ऑफ द लोअर बैक के कारण हमारे बैक में और बैक मस्कुलेचर में पेन शुरू हो जाता है और मूवमेंट्स अफेक्ट होते जाते हैं एंड फाइनली फंक्शनल डिसेबिलिटी डेवलप होती है.
ये बेसिक्स थोड़ा समझाना चाहूंगा जो कि हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है, जो कि आज हम देखते हैं कॉमनली विद द फोन्स, which is very very common, and almost if we see more than 90 to 95 people around, in at least in the urban areas, they have the phone and they are in continuous usage of the phones. So the posture which we see the phone is very important, and looking the phone in an upright position, it helps our neck as well as back pain because it keeps the back in a good posture. नहीं, ये जब हम नीचे झुक के, जैसे हमने डायग्राम में दिखाया, इन 45 टू 60 डिग्री जब हम नीचे झुकते हैं तो लोअर बैक पे जो लोड आता है, which is much more than when we see the phones or a screen. This is not only for the phones but also for the screen on the laptop. So this posture affects the lower back musculature quite significantly. Again, a standing posture, जिसमें balanced upright posture is very important, where our back and our buttock region should be in straight form, and the center of gravity should pass from the head into the center of the pelvis and into the center of the foot. ये दो पोस्चर जो लेफ्ट और राइट में हमने दिखाया है, लेफ्ट साइड इज अ फ्लैट बैक, जब हम आगे झुक के चलते हैं फ्रॉम द लोअर बैक, और एक राइट साइड में पोस्चर है जो स्वेड बैक है, जिसमें हमारा लोअर बैक इज पुश्ड फॉरवर्ड्स बट द अपर बैक इज पुश्ड फॉरवर्ड, जिसमें हम राउंडेड शोल्डर्स देखते हैं, एंड इसमें एब्डोमिनल मस्कुलेचर काफी वीक हो जाते हैं. तो ये दोनों ही पोस्चर हमारे लोअर बैक के लिए या अपर बैक के लिए भी हानिकारक है, एंड इट अफेक्ट्स द लोअर बैक मस्कुलेचर quite significantly. So a balanced upright posture at your work and otherwise is very important. Now your posture at work, again it is becoming an occupational hazard that हमारा occupation अब एक्सेसिव लेबर वर्क से ज्यादा सिटिंग वर्क हो चुका है. जो चेयर पोस्चर पे हम बैठते हैं वो पोस्चर करेक्ट करना काफी जरूरी है, जहां पर हम लोअर बैक को पीछे टच नहीं करते हैं एंड स्लिप होके जस्ट अपर बैक एंड नेक को टच करके बैठते हैं, तो दैट लोअर बैक बिकम्स अ राउंडेड पोस्चर. तो ये लोअर बैक जो राउंडेड पोस्चर में आता है, इसमें मसल स्ट्रेन्स इज सो मच दैट इट अफेक्ट्स द लोअर बैक joints as well as the musculature. So it should be protected well so that your posture is not affected. हमें देखने हैं वो 10 या 10% लोग जो लोअर बैक पेन सीरियस कंडीशन डेवलप कर सकते हैं. When do you know your back pain is serious? Now there are some of the things your physician या जो भी डॉक्टर को आप विजिट करते हैं, लाइक फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिक और जनरल फिजिशियन, they must rule out these basic things when you visit for a lower back pain. जब आप बैक पेन के साथ विजिट करते हैं तो आपके डॉक्टर ने ये कुछ चीजें जो काफी कॉमन है एंड ये आपको तकलीफ आगे लाइफ में दे सकती है, ये चीजें रूल आउट करनी जरूरी है. जैसे कि ये बैक मसल स्ट्रेन और स्प्रेन, ये जनरल बैक पेन है विच इज जस्ट बिकॉज ऑफ रूटीन वर्किंग, और इट इज अ बेसिक अक्यूट स्प्रेन और स्ट्रेन. डिजेनरेटिव डिस्क डिसीज जो हमारे एजिंग के वजह से होती है, और ये स्पाइनल बोन्स एंड मस्कुलेचर वीक होने के कारण होती है, एंड जॉइंट्स के आर्थराइटिस की वजह से होती है. प्लस हर्निएटेड डिस्क, जहां पर हम अक्यूटली देखते हैं कि ये जो डिस्क होती है वो स्लिप होके बाहर आ जाती है एंड देन इट अफेक्ट्स द नर्व्स which produces sciatica. So this is the slip disc where we see a chronic, an acute or a chronic problem. Spondylolisthesis is a terminology which is used when the bones of the spine is slipped forwards. जो हमारे vertebral bones है वो जब normal posture से आगे सरक जाते हैं एंड पीछे की nerves impinge हो जाती है, उन्हें हम spondylolisthesis बोलते हैं. और similarly spinal canal stenosis is a term where the nerve in the spinal cord is affected because of a severe pressure chronically. अब ये कुछ फ्लैग साइंस है जहां पर हमें काफी सतर्क रहना है एंड अपने ऑर्थोपेडिक या स्पाइन कंसल्टेंट को विजिट करना है ऑन टाइम.
नहीं तो इसमें प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। जब हमें लोअर बैक पेन के साथ ये लोअर लिम्ब पेन मतलब पैर के दर्द में शुरुआत होती है और पैर में नमनेस या वीकनेस की शुरुआत होती है, तो इसके कारण काफी हो सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है उसमें प्रोलैप्स स्लिप डिस्क और एक स्टीनोसिस, स्पाइनल स्टीनोसिस, और वहां से जो नर्व इम्पिंजमेंट शुरू होता है उनसे पैर में जो दर्द जाता है उनको साइटिका बोलते हैं। ये काफी दूसरे कारण के वजह से भी हो सकता है, जैसे कि कैंसर होता है स्पाइन में जो कि काफी कॉमन है, अनकॉमन नहीं है। फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि ऑस्टियोपोरोटिक हो सकते हैं, जैसे ओल्ड एज में बिना मेजर ट्रॉमा या एक्सीडेंट्स के हो सकते हैं, या फिर मेजर एक्सीडेंट की वजह से भी फ्रैक्चर दिखे जाते हैं हमें। सिवियर स्पाइनल डीजेनरेशन जो ओल्ड एज प्रॉब्लम्स होती है, जहां पर थोड़े एक्सेसिव बोन ग्रोथ और स्पाइनल कैनाल की जगह छोटी होने की वजह से ये नर्व इम्पिंजमेंट के कारण सिवियर स्पाइनल डीजेनरेशन से स्पाइनल स्टीनोसिस होता है। और इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन इन इंडिया हम देखते हैं टीबी इन्फेक्शन और कुछ अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं, बट ये इन्फेक्शन और फ्रैक्चर के से हमें सतर्क रहना है, ये मिस नहीं होने चाहिए। इसीलिए हमें हमारे फिजिशियन से मिलना राइट टाइम पर जरूरी है। जब ये बैक पेन फीवर या नाइट स्वेट्स के साथ प्रेजेंट होता है तो वी शुड बी केयरफुल दैट वी आर नॉट मिसिंग आउट बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, या फिर कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होते हैं जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिन्हें हम संधिवात कहते हैं, जहां हमें दिखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, पेशेंट्स काफी आते हैं, बोलते हैं कि दिन भर हम काफी एक्टिव रहते हैं, जब मॉर्निंग में सो के उठते हैं तो हमारी बैक बहुत स्टिफ हो जाती है एंड मूवमेंट्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एंड ग्रेजुअली जब हम काम शुरू करते हैं, डेली रूटीन एक्टिविटी शुरू करते हैं, तो बैक रिलीव होती है एंड पेन कम हो जाता है, और ग्रेजुअली ये जो स्टिफनेस है वो बढ़ता जाता है। तो दिस प्रॉब्लम इज समवेयर रिलेटेड टू द इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसमें मोस्ट कॉमन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। जब ये प्रॉब्लम्स ट्रीट नहीं की जाती है और हमें इन्हें इग्नोर करते जाते हैं, तो ये सिवियरिटी इंक्रीज करते करते कुछ हद तक पहुंचते हैं जहां पर वे स्पाइनल कोलैप्स एंड फर्दर प्रॉब्लम जैसे पैरालिसिस एंड न्यूरोलॉजिकल डैमेज शुरू हो जाते हैं। जब ये पेन वर्स होता है नाइट में, तो इट इज एन हाई रेड फ्लैग साइंस to rule out an infection, cancer, or a tumor. When it comes with an unexplained weight loss or loss of appetite, of course, cancer has to be ruled out along with infections. If it comes with other accompanying joints, जब ये दूसरे joints के साथ affect होता है, mostly knee joints, hip joints, neck में और बाकी बड़े joints में, तो ये autoimmune disorders के साथ present करता है, जो हमने अभी discuss किया, ankylosing spondylitis as well as rheumatoid arthritis, जिनमें हमें morning stiffness काफी हद तक पाया जाता है। ये कुछ एसोसिएशन है अमेरिकन के न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स के, जो रिकमेंड करते हैं कि लोअर बैक पेन जब इंप्रूव नहीं होता है, 2 to 3 वीक्स ऑफ ट्रीटिंग एट होम, 2 से 3 हफ्ते तक ये जो जनरल लोअर बैक पेन ट्रीट कर रहे हैं हम, तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसे इवेल्युएट करना चाहिए, इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए एंड उसका डायग्नोज करना चाहिए, एंड इट हैज टू बी ट्रीटेड वेल प्लान्ड. So it should not be ignored when it is more than 2 to 3 weeks. So same guidelines should be followed with Indians. If people experience severe lower back pain, जब ये पेन काफी सिवियरिटी के साथ प्रेजेंट करता है, तो हमें 2 to 3 वीक्स का वेट नहीं करना चाहिए। उन पेशेंट्स को अपने लोकल डॉक्टर या फिर अपने ऑर्थोपेडिक या स्पाइन कंसल्टेंट से जल्दी मिलना चाहिए to rule out any injury, fall or accident and which can cause infections or trauma. क्या साइंस और सिम्टम्स दिखते हैं हमें लोअर बैक पेन जो पेशेंट्स हमें प्रेजेंट करते हैं? इनमें एक शार्प और डल एकिंग पेन which is a chronic pain in the lower back or sometimes it is an acute pain. अब ये पेन कभी लोअर बैक पेन से बटक्स या लेग्स की तरफ रेडिएट होता है, which is called as sciatica, which is again a red flag signs to rule out lumbar canal stenosis and slip disc. Inability to stand up straight without pain
इंडिकेट स्पाइनल स्टीनोसिस और आर्थराइटिस। ये जो स्पाइनल आर्थराइटिस होता है उनमें काफी लोगों में हम देखते हैं कि पेशेंट सीधे नहीं खड़े हो पाते, झुक के चलेंगे, बेंडिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ सीधे खड़े रहने बोलो तो उनके बैक में काफी दर्द शुरू हो जाता है एंड एक इन्फ्लेम्ड पिंचिंग पेन शुरू हो जाता है, और ये इनएक्टिविटी, रेस्ट्रिक्शन एंड स्टिफनेस शुरू हो जाता है अपॉन वॉकिंग अप। Common causes for the lower back pain we see are the muscle strains or the ligament strain from overactivity। जब हमारे बॉडी के कैपेसिटी के अगेंस्ट हम वेट लिफ्टिंग करते हैं इन एन ऑड पोस्चर, तो ये बैक पेन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन्स इन द मसल्स एंड स्ट्रेन्स। जब ये मस्कुलेचर टेयर होते हैं, लिगामेंट टेयर होते हैं, which is very common and seen in 85% of the population। 85% back pain is caused due to the damaged muscle tissues, which is because of the ligament tear in the lower back as well as because of the sprain in the muscles। ये बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है जिससे लोग काफी डरे हुए रहते हैं, और पेशेंट्स आते हैं हमारे पास डायरेक्ट कंप्लेन के साथ, क्या ये स्लिप डिस्क है, रूल आउट करने आते हैं कि क्या स्लिप डिस्क है या कोई और प्रॉब्लम है। तो स्लिप डिस्क क्या है? हर्निएटेड डिस्क, जहां पर हमारे लोअर बैक में, ये एक मॉडल है जहां पर हम स्लिप डिस्क का मॉड्यूल प्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये लोअर बैक के जो बोन्स है उसके बीच में ये डिस्क होती है। जब ये डिस्क कोई भी इंजुरी या कोई स्ट्रेन या कोई जर्क के कारण स्लिप होके बाहर निकल जाती है, तो यहाँ पर एक नर्व जो पास हो रही है स्पाइनल कैनाल से या फोरामेन से इनटू द लेग्स, वो इम्पिंज हो जाती है, और उसके कारण ये नस दबने के वजह से हमारे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, जो एसोसिएटेड होता है लोअर बैक पेन के साथ। एंड ये कंडीशन को हम स्लिप डिस्क बोलते हैं, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज herniated डिस्क और lumbar disc herniation। एंड ये काफी पेनफुल कंडीशन होता है, एंड द पेशेंट कम्स इन एन एक्सक्रूशिएटिंग पेन, unable to walk straight or unable to stand up straight। एंड वो एक लिस्ट जो हमारे बॉडी पोस्चर को एक तरफ टिल्ट कर देती है बिकॉज ऑफ द नर्व इम्पिंजमेंट, एंड काफी पेनफुल कंडीशन है, which is to be treated very cautiously and acutely। 9 signs we see where a herniated disc is affected। When a patient is associated with herniated disc, pain while sitting में उनके lower back pain and sometimes the buttock pain शुरू हो जाता है, radiating pain into the leg which is called as sciatica। sometimes वो present करते हैं tingling, numbness and weakness के साथ, and specific pain which is aggravated by a specific activities like backward bending, twisting or some movements in bed। Numbness in the leg is a red flag signs even for the slip disc, and arm or leg pain also affected by the slip disc। Muscle spasms because of this slip disc is highly common, which gives a lower back pain and an acute restriction of the lifestyle। Pain which worsens at night again gives us a red flag signs to rule out the severity of the slip disc। ये जो दो कॉमन सिम्टम्स है स्लिप डिस्क के, लाइक लोअर बैक पेन, ट्विस्ट होकर चलना, एंड sciatica which is a pain radiating down the leg, which is the most common symptom presented to us because of the slip disc, and it has to be treated acutely। जब ये acutely treat नहीं किए जाते हैं तो ये chronic form में develop होते हैं, and वो long term तक treatment चलाना पड़ता है, and sometimes it becomes a surgical treatment। sciatica क्यों होता है? sciatic nerve एक कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स है जो हमारे लोअर बैक के बोन्स में से शुरू होती है, और 5 nerve roots which combines and forms a sciatic nerve। उनमें से कोई भी एक नस लोअर बैक में दब गई या स्लिप डिस्क की वजह से इम्पिंज हो गई, तो वो नर्व का पेन थ्रू आउट द लेग जाता है, फ्रॉम द ग्लूटियल रीजन और बटक रीजन, वहां से फुट तक जो पेन रेडिएट होता है उसको sciatica बोलते हैं। उसके सिम्टम्स और साइंस हमने एक्सप्लेन किए हैं। उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं कुछ, एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग, ओबेसिटी, prolonged sitting which reduces the musculature,
and affects the potency of the weightlifting or both inactive lifestyles. उनके diagnosis and treatment at a right time is very important. Prevention can be done with a proper lifting techniques, regular walk and yoga, regular stretching exercises, weight control, and maintaining proper posture when you sit. स्पाइनल आर्थराइटिस एक एजिंग प्रॉब्लम है. जब हम देखते हैं हेल्दी स्पाइन जो यंगस्टर्स में दिखती है, बट इट कैन बी सीन इवन इन द ओल्ड एज व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर स्पाइन very carefully and you do not overload your spine more than the capacity of your body, but then that capacity can be overbuilt by your regular exercises. Spinal arthritis एक degeneration है. Spinal arthritis is a degeneration. This is the facet joint and this is the intervertebral disc. Both of them are affected because of the degeneration. और ये मस्कुल और ये एंड प्लेट्स जो अफेक्ट होते हैं, these are painful और उनमें पेन जनरेटर्स इनिशिएट होते हैं जो हमारे बैक में पेन डेवलप करते हैं. उसके और दूसरे कारण है जहां हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस देखते हैं, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, which is not because of age but because of the inflammation in the joints, and it affects the multiple level of the spine at same time. और ये स्पाइन के मूवमेंट्स काफी स्टिफ कर देते हैं एंड उनमें फंक्शनल डिसेबिलिटी डेवलप करते हैं. एडवांस्ड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ये सारे जॉइंट्स फ्यूज हो जाते हैं और हमारे स्पाइन का जो मूवमेंट है कुछ भी थोड़ा भी बेंड नहीं होता है एंड द पेशेंट प्रेजेंट विद अ stiff posture like a bamboo spine. We call it as a bamboo spine when the patient is not able to bend even more than 20 to 30 degrees. And patient सिर्फ एक ही posture में रहता है, in a standing or in a stooping posture which is fixed throughout the life. This is the mantra to get cured or get benefited from your lower back pain problems. Prevention is always better than cure in all diseases, mainly in the lower back pain. Why? Because it can be prevented. Because the cure sometimes is so long that the patient gets exhausted and the lifestyle gets affected. How to prevent these lower back pain? It is basically a simple lifestyle changes that prevents the back pain. Many of the lifestyle we have in our routine daily life, which is during your household activities, during your office activities, how you bend, how you stand, how you sit at office, how you sit at house, how you sleep, what is the posture at your work, how much are you standing, how much are you loading your spine. ये सारे movements जो हमारे daily routine activities को affect करते हैं, उन्हें जब हम ट्रेन करके प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करते हैं तो ये लोअर बैक पेन के प्रॉब्लम्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं. नाउ द मैट्रेस, मेनी ऑफ द पेशेंट्स कम टू अस विद problems of lower back pain and these problems happens just because of a wrong mattresses. हम recommend करते हैं कि ये mattress which are made up of excessive foams, which are Dunlops and very soft mattresses, doesn't give a good posture at sleep. So a posture correction can happen only with a good mattress. Not a very hard or not a very soft mattress will help you in preventing these matters, but a slightly firm mattress which is not completely made of foam or a very hard surface will prevent your lower back pain. There are a lot of good companies available जो हमें अच्छे मैट्रेसेस, ऑर्थो बेड्स विद गुड कंपनीज मिलते हैं जिससे हमें ये बैक पेन बिकॉज ऑफ मैट्रेसेस प्रिवेंट किए जा सकते हैं, जिसमें हमारा स्लीपिंग पोस्चर भी सही हो सकता है. एंड अगेन इवन द मैट्रेस के साथ हमारा स्लीपिंग पोस्चर हैज टू बी वेरी गुड which can affect your back. So these are some postures which can be taken up to prevent your lower back pain. How to manage lower back pain while working from home?
ये काफी कॉमन कंडीशन डेवलप हुई है पोस्ट कोविड, जब वर्किंग फ्रॉम होम शुरू हुआ है since last few years, where people keep on working and they cannot maintain the posture because of the regular working at home and disturbances at home. So ये posture कैसा रहना चाहिए? When you are working on the laptop or a computer, your eye level should be at the upper edge of the laptop or your screen, so that your vision is little bit directed downwards and your neck is not affected. Keep your chin level in a straight position and relax your shoulders. Keep your spine straight so much as you can, and support your lower back with a cushion, either a rounded pillow or a back cushion, which is available quite readily at every places, to maintain the curvature or a lumbar lordosis of your lower back, which will help to maintain your straight back posture. पेल्विस सपोर्ट देना बहुत जरूरी होता है. जब हम पेल्विस सपोर्ट नहीं देते हैं तो वी स्टार्ट टचिंग आवर लोअर बैक टुवर्ड्स द चेयर एंड इट स्टार्ट्स स्टूपिंग योर अपर बैक, और फिर ये राउंडेड बैक इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व. अगेन ये जब मैंने एक्सप्लेन किया था पुअर पोस्चर एट वर्क, दिस इज द राइट पोस्चर टू स्टैंड, which is not possible for a prolonged period. So better to keep moving when you have a standing work at least every 20 minutes. Don't stand more than 15 to 20 minutes at a particular position. It is a body condition that will not allow you to stand for more than 15 to 20 minutes, else your back will start straining and gradually your back will sway or it will get a rounded back posture. So these are some exercises which you can do. These are called as office yogas. These are also called as workstation exercises, which you can do even at a sitting posture. They don't demand you to get up from your chair, or they don't even take your time from work. It just takes a basic few seconds or minutes from your work hours, which can be done every 2 hourly, which will help to increase the blood flow to your musculature and to increase the mobility of your lower back as well as the upper back and neck. How to prevent the back strain? Now your body has a specific capacity, how much weight can be lifted. So everyone cannot lift any amount of weight. So body has a potency to lift some amount of weight, which has to be understood and which can be understood by a particular individual himself. So the wrong way of lifting, like an odd position, turning and lifting, is affecting your lower back because it causes a lot of muscle strain as well as a strain to the body. So the right way is to bend or to sit down on your knees and then lifting up, keeping your lower back straight, rather than bending completely and lifting up. So these are some right postures mentioned. This is the good posture for standing. Flat shoes with lower heels also helps to prevent lower back pain. Excessive heel pushes a lot of strain on your hamstring muscles, and that indirectly affects the lower back because it increases the strain on the lower back musculature. तो ये high heels की जो habit है, it should not be a sustained habit. वो high heels की habit सिर्फ limited timing period के लिए होनी चाहिए, and flat heels should be promoted, जिससे lower back पे strain कम हो जाता है and back pain का pressure कम हो जाता है. Regular exercises for your lower back pain. Lower back is very important, and inactive lifestyle हमारे lower back pain पर बहुत ज़्यादा contribute करता है. जब ये lower back pain sustain हो जाता है तो हम treatment modalities के बारे में बात करते हैं. जो basic modalities है lower back massages, which is available quite frequently at multiple stores, multiple places, which helps in relieving or increasing the blood flow to the lower back muscles and improves the lower back pain, which is a mechanical muscular pain. Therapeutic injections are available, which are epidural injections and foraminal blocks and other fascial blocks. So it technically
साउंड प्रोसीजर है, बट उसके इंडिकेशंस काफी स्पेसिफिक होते हैं, एंड वी नो विच पेशेंट विल बेनिफिट फ्रॉम दीज थेरापेटिक इंजेक्शंस. Only those patients are being advised for these therapeutic injections are being done commonly, very widely nowadays. Medications जो होते हैं वो है muscle relaxants, pain medicines, and some medicines which improves the health of the lower back are some vitamins, which includes vitamin D and vitamin B12, some calcium supplements. At a certain age, females need some calcium supplements to improve the intake of the bone calcium and to improve the bone health. Manual therapies or physical therapies are somewhere very important, which helps in promoting the exercises or the movements of the lower back, and it prevents the stiffness of the lower back and hence the pain of the lower back. जब ये modalities हम पार कर चुके हैं and these are not affecting, या फिर जब patients हमारे पास quite acute condition में आते हैं, जब हमें ये modalities provide नहीं किए जा सकते हैं, then patients land up into surgical options. जहाँ हम lowest चीज देखते हैं micro discectomy and an endoscopic discectomy, which is quite a safe procedure nowadays, and it is done through the endoscopic or a smaller keyhole procedures, which improves your back health, again preventing the nerve compression and removing whatever pressure is there on the nerves, and improves your pain suddenly, immediately, and allows you to function normally. वैसे ही दूसरा प्रोसीजर है lumbar decompression, and sometimes it is added on with spinal fixation. Bracing is again an important term or important method of preventing and treating these lower back pains. What is bracing? Bracing हम बोलते हैं जहां पर हम ये लोअर बैक के बेल्ट्स और ब्रेसेस यूज करते हैं जो हमें बैक सपोर्ट देता है. ये कब जरूरी होता है? It has to be understood and it has to be properly guided or trained from an orthopedic or a spine specialist. Everyone cannot be braced, and anyone cannot be trained with a bracing or treated with a bracing, because it also affects the spinal musculature for a longer term or a chronic run. So ये bracing के जो modality of action है, that prevents restricts the twisting and bending movements, which prevents the further injury. जब हमें patients land up होते हैं acute trauma के साथ, acute injury के साथ और acute sprain के साथ, तो हमें उनके movements restrict करने जरूरी होते हैं, so that they get enough of rest to the lower back musculature and skeletal system, जहां हम हमारे healing potential बढ़ा सके और उन्हें ब्रेस करने से उनके spine musculature में rest मिल सके. So bracing is very important to treat these acute spinal conditions. It also helps you to maintain good postures when you bend forward and lift things. There are multiple braces available for the lower back as well as for the upper back in market. For a right brace, you should consult your doctor before using it. It is not advisable to purchase them over the counter as per your comfort, because it might harm you for a longer run. The next question is, when would you need a spine surgery? After such a long discussion of the conservative treatment, कुछ पेशेंट्स जो 5 to 10% कैटेगरी में आते हैं, जो हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं आफ्टर अ लॉट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट, या कुछ अक्यूट कंडीशंस जहां हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड होती है और सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है. वो कुछ कंडीशंस होती है जब पेशेंट्स प्रेजेंट्स विद अ सिवियर पेन and the patient or an individual finds it difficult to function in day-to-day activities, and जब ये nerves में impingement इतना severe होता है that their routine is drastically affected, or it might affect the spinal nerves to such an extent that it can lead to paralysis or weakness in the legs.
Again, the pain which does not get better even after 6 to 12 weeks course of non-surgical treatment also sometimes need an intervention of surgery. Again, this is not a routine suggestion that 6 to 12 weeks course of non-surgical treatment se nahi hua to everyone will need surgery. No, it is not like that. Every individual has to be properly evaluated, properly investigated. Their condition has to be seen whether it is correlated with the investigations finding, which is mainly seen with the MRI, and whether your surgical treatment can surely treat your painful condition. It is not like surgical treatment can surely treat your painful condition, but there are indications which will 100% treat your pain, but it has to be evaluated and the patient selection has to be proper, which can be done by your right orthopedic or spine surgeons. There are multiple spine surgeries we see nowadays, which has progressed gradually from the open or a big spine surgeries now to the endoscopic or a keyhole spine surgeries. Both are equally important, both are equally effective, but there are a lot of advantages of the endoscopic spine surgeries where we have a very smaller cut, faster recovery than the open spine surgeries, lesser blood loss, no or less soft tissue damage, less pain after surgery, smaller incisions, less scarring, shorter stay, which is about a day stay or a daycare surgical sometimes, and a faster mobilization of the patient, faster coming back to the active lifestyle. So these are some advantages of minimally invasive spine surgeries, but they have to be accepted or taken an option only after your spine or orthopedic surgeon is comfortable with. Frequent causes of leg and back symptoms is a herniated disc. Here, high forces can cause the outer fibrous ring to rupture and the fibers and core material to exit into the spinal canal. Depending on the anatomical structures and location of the herniated disc, the symptoms can be very different. It is possible that disc tissue compresses important neural structures, causing pain sensitivity disorders and limited mobility. After a detailed examination, consultation, and treatment by a doctor, surgical removal of intervertebral disc tissue for decompression of nerve structure may be necessary. The so-called full endoscopic technique is a standard, minimally invasive method for spine surgery that allows the complete removal of a herniated disc and decompression of nerves through a small skin incision and little trauma. First, a guide wire is used to ensure the correct position. This was a short video to understand what is spinal or the endoscopic spine surgery. These are some basic feedback from the patients post spinal surgery, which are the immediate post-operative videos, walking videos. It might be a day post-surgery. माझे नाव रविराज कांबळे आहे. माझं लास्ट 1.5 महिन्यापासून पाठीमध्ये जाईस नव्हतं. त्यामुळे मला चालता येत नव्हतं. चालताना या उभं राहता काहीच मला जमत नव्हतं. तर माझ्या एक कझनने मला सजेस्ट केलं विकास जैन डॉक्टर म्हणजे त्याच्याकडे जाऊन ट्रीटमेंट घ्या. माझा 1.5 महिन्याचा प्रॉब्लेम त्यांनी 1 वीक मध्ये सॉल्व्ह आउट केला. माझी मायनर सर्जरी आणि त्यातून मला 1 हफ्त्यामध्ये एवढा फरक जाणवला का मी आता चालतोय, उठतोय, चांगला बसतोय, जेवतोय आणि काहीच मला प्रॉब्लेम नाही. A few videos on the patients. Now there are a few tips to manage the lower back pain. Important tips are to improve your physical fitness. Regular exercises is a very important means to treat this lower back pain. Maintaining a proper body weight, obesity, as we have discussed, is a very
common and important problem which affects the lower back. Proper and healthy food habits, use correct lifting and moving techniques. Wrong postures while lifting affects your lower back. Make your workspace as ergonomic as possible. Manage your mental health, avoid alcohol and smoking. These are few tips to manage your lower back pain, to prevent it to get stiffen and weaken. Thank you for listening me. I'll accept all your questions. Thank you very much, Doctor, for your wonderful presentation. Very flawless presentation. You are each and every aspect of low back pain, and really thanks for your presentation. And also you are explained about non-surgical as well as the surgical. Even in the surgical also you are explained about the full endoscopic, which is a very recent one. That also you are explained in detail very well. Thank you very much, Doctor. Now, before we are going to go for a question and answer session, my colleague is having a small presentation on the braces, because when you are going to explain about the braces, how the braces plays a major role when it comes to the low back pain, especially to treat conservatively, is going to have a small presentation with 2 minutes with your kind permission, Doctor. सभी को नमस्कार। अब हम 1 मिनट में ब्रेसिंग के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग अभी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें सबसे बड़ा रोल रहता है ब्रेस का। तो ब्रेस का बैक पेन मैनेजमेंट में क्या रोल है, इसके बारे में अभी हम जानेंगे इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो जो भी ब्रेसेस आपको दिखाई देते हैं, तो पहले अपन जानेंगे कि ब्रेस मतलब क्या। तो जो भी इंजर्ड पार्ट में एक्सटर्नली अप्लाई किए जाने वाला प्रोडक्ट रहता है, उसे ब्रेस बोला जाता है। तो बहुत प्रकार के ब्रेसेस अवेलेबल है मार्केट में। तो उसमें ब्रेस का सब मतलब काम क्या रहता है, तो ब्रेस सपोर्ट के लिए काम आता है, पेन रिलीफ के लिए काम आता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मसल स्टेबलाइजेशन के लिए आता है, तो पोस्चर करेक्ट करने के लिए आता है। ऐसे बहुत सारे ब्रेसेस है। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है। बैक पेन में ब्रेस काम करता है क्या, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ब्रेस और बैक पेन का क्या रिलेशन है। तो ऐसा है कि जो बैक पेन रहता है, तो उसमें जो प्राइमरी कॉज रहता है, जैसे कि डॉक्टर ने हमें अभी वेबिनार में बताया कि प्राइमरी कॉज क्या रहता है, कि जो डिस्क का प्रॉब्लम रहेगा, नर्व का प्रॉब्लम रहेगा, वो जो है वो प्राइमरी कॉज है। मगर बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, वो मेन कॉज रहता है आपके मसल स्टिफनेस का और बैक पेन का। तो उससे ट्रीट करने के लिए ब्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कंजर्वेटिव है, और कोई मेडिकेशन लिए बगैर आपको वो पेन से छुटकारा मिल सकता है। तो इसमें बहुत सारे प्रकार के ब्रेसेस रहते हैं। तो अभी हमने देखा है, तो ये इस फोटो में आप देखोगे तो ये ब्रेस है, नॉर्मल ब्रेस। तो नॉर्मल ब्रेस पहनने के भी कुछ फायदे रहेंगे, और उसके साथ साथ एक मतलब आपको उसके डिसएडवांटेज भी मिल जाता है। क्योंकि क्या है, नॉर्मल ब्रेस मोस्टली इलास्टिक मटेरियल से बनाए जाते हैं, तो उसके वजह से जो जिस एरिया में कंप्रेशन की जरूरत नहीं है, उस एरिया में भी कंप्रेशन मिल जाता है। तो उसके वजह से मसल अट्रोफी के चांसेस रहते हैं, और आपका मतलब अननेसेसरी पेट के ऊपर प्रेशर पड़ने का चांस रहता है। तो ये सब उसके डिसएडवांटेजेस है। तो मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन मिल जाता है, एग्जैक्ट इशू जो है उसको एड्रेस करने में प्रॉब्लम आता है। ऐसे बहुत सारे उसके डिसएडवांटेजेस है। तो लो बैक पेन जैसे कि हमने अभी बात किया है, तो जो प्राइमरी कॉज रहता है, तो उसी प्रकार से एक सेकेंडरी मतलब बॉडी वो मेंटेन करने के लिए मसल्स स्टिफ हो जाता है।
तो उसी के वजह से उधर स्वेलिंग और पेन आपको महसूस होते रहता है। तो उसमें अभी एस्पेन मेडिकल प्रोडक्ट्स किस प्रकार से काम करते हैं, तो अभी हमने जैसे बात किया, तो एस्पेन के जो ये इससे बोलते हैं एस्पेन लंबा सपोर्ट, ये जो है ये मुझे लगता है कि पहला इनइलास्टिक ब्रेस है जिसमें इलास्टिक मटेरियल का यूज किया गया नहीं है। तो आपको टारगेटेड कंप्रेशन देने मिल जाएगा। तो टारगेटेड कंप्रेशन से मेरा मतलब है जिस एरिया में आपको देना है, प्रेशर अप्लाई करना है, बस उसी एरिया में आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हो और आपको ये ब्रेस टाइटली पहनने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आपको पुल ये दिख रहा है, ये स्लिक ट्रैक, इसे बोलते हैं स्लिक ट्रैक मैकेनिज्म। इसके हेल्प से आप प्रेशर एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सभी आपके पास चॉइस रहते हैं एस्पेन इसमें। तो ये जो प्लेट दिख रहा है, ये आपके बॉडी के जो कर्व्स है उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये क्या करता है, जिसमें जैसा मतलब इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट टू द बॉडी, उसके प्रकार से ये बॉडी को प्रेशर अप्लाई करता है। तो ये एक एडवांटेज है। इसमें 4:1 इंडिपेंडेंट कंप्रेशन मैकेनिज्म है। तो ये स्लिक ट्रैक मैकेनिज्म मैंने जो आपको बताया, तो इसमें एक पुल करने के बाद जो 4 टाइम वो प्रेशर मिल जाता है आपको। तो ये 4:1 मैकेनिज्म है। एस्पेन का अगर कंपैरिजन किए जो अपने जो नॉर्मल ब्रेसेस है, उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है वो इनइलास्टिक इन नेचर है और आपको प्रेशर जो है स्लिक ट्रैक मैकेनिज्म से एडजस्ट करने आता है और इंडिपेंडेंट कंप्रेशन देते हैं। मतलब जिधर चाहिए उधर ही कंप्रेशन देने आता है, क्योंकि वो एक इनइलास्टिक ब्रेस है, इलास्टिक मटेरियल का यूज नहीं किया है उसमें। तो वो एक इसका एडवांटेज है। तो ये है एस्पेन प्रोडक्ट्स, एस्पेन लंबार ब्रेस का एक आप फोटोज देख सकते हो। पहले फोटो में आप देखोगे तो ये स्लिक ट्रैक के हेल्प से वो प्रेशर एडजस्ट कर रहे हैं इधर। तो पहनने में एकदम आसान है। आपको शर्ट के अंदर भी पहन सकते हो, ड्राइविंग करते समय भी पहन सकते हो। इसमें मतलब टाइट पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रेशर जो है, कंप्रेशन जो है, वो ये दोनों पुली से एडजस्ट कर रहे हो। तो ये है मैकेनिज्म उसका। Muscle guarding does limit the motion, but once these big muscles fatigue, they go into spasm, and quickly they become the main source of the back pain. Doctors often prescribe muscle relaxants, but scientific research has now shown that for most patients, Quick Draw's patented mechanically advantaged tightening system allows these muscles to relax, providing immediate pain relief. तो इस प्रकार से आपको एडवांटेजेस मिल जाते हैं एस्पेन लंबा सेटअप में। आपको कस्टमाइज करके कंप्रेशन मिल जाता है। तो उसका एक आसान सा डिजाइन है, एडजस्टेबल स्ट्रैप्स है, ये सभी इसके बेनिफिट्स है। तो आपको एस्पेन मेडिकल प्रोडक्ट जो एस्पेन लंबा सपोर्ट ट्राई करना है, तो एक बार आप डॉक्टर से बात कीजिए और डॉक्टर से बात करने के बाद इफ द ब्रेसिंग इज एडवाइज, हम आपको एक प्रिस्क्रिप्ट ये फॉर्म लिंक देंगे, उसमें आप अपने डिटेल शेयर कीजिए, हम आपको फ्री डेमो प्रोवाइड करेंगे उसका। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you, Rogan, for your presentation. I hope everyone got the knowledge about the braces. Even doctor also informed, don't take your own decision when you are going to buy braces, because nowadays it is available very commonly in any pharmacies or even online. Better to consult always to take a right brace for yourself. Okay, thank you very much. And before next, what we'll do, we'll have a question and answer session. Before I'm going to hand over the session to other audience, sir, few questions in the chat box, doctor. I would like to ask some questions. There is few questions in the chat box. 1 minute, sir. I'll read one by one. Just you will comment on that, sir. Sir, is the back pain linked with the knee arthritis? Anything? Yes, it is linked with knee arthritis, of course, because it is a degenerative process. Knee arthritis as well as the spinal arthritis are most of the time clubbed together with an aging changes. So as our body is loaded, our spine as well as knee both are loaded together, like we see in obesity, both are loaded together. And when we develop knee arthritis, simultaneously we develop the spinal arthritis as well, which is a simultaneous procedure. Otherwise, when the patient has already developed a knee arthritis, it causes an
imbalanced posture or an unstable posture which prevents them from walking straight. So it prevents the proper loading of the spine. It sways the spine and causes musculature weakness and strain and sprains on the lower back, as well as increasing the risk of the spinal arthritis. So overloading of the spine because of the knee arthritis is quite common, and it surely affects the lower back. Okay. Thank you very much, doctor. Sir, one more thing. There is one more question. If only muscle pain, whether it is cured by only like acupuncture or any other simple massage will be okay? It's, of course, it is okay, because most of the lower back pain we see are the muscular pain or a non organic pain, where we do not find any of the organic factors like spinal stenosis or slip disc or fractures or trauma or infections or tumors. So these back pains which are affected only because of the muscle spasms and inactive movements or some sprain or overloading of the spine can be treated with the physical therapy or acupuncture, and they are highly acceptable treatment modalities. Thank you very much, doctor. Now we'll go the group. Few people already raised the hands actually. I'll allow one by one. If you have any other questions also after this, you can ask. Namita Goyal, you can ask now. You can unmute and talk to the doctor. Good evening, doctor. I had a sciatica pain from last 4 months. I was doing yoga, but it has increased by that. Doctor has prescribed, I consulted a spine surgeon. Doctor has prescribed this Lyrica. It is a paraglobin, but it has so many side effects that I couldn't be able to take that because I have to take care of my son and have to do regular course. So right now I'm like taking only physiotherapy, right? On no medicines, not anything. But with physiotherapy, I'm starting it from 9th September, almost 10 to 12 days ho gaya mujhe. But the pain goes on and off. Sometimes it is only on hip side, sometimes it goes beyond the legs. So is there any major concern, or how can we check, is this only a sciatica pain or knee pain is because of the overweight problem that I know? So the both are combined in the right leg. So is only physiotherapy will help, or do I need to do some MRI or X-ray, or any medications is required, because the pain is right now on and off move. Sometimes it is severe, sometimes it is bearable. I take your question. So is this a chronic pain? Since how long it has started? I have started physiotherapy from this 9th of September. I think so this pain, if it becomes chronic and it is regularly affecting your daily routine, I think it is time for evaluation further, because the leg pain or a sciatic pain is usually associated most of the time with some or the other nerve impingement in the lower back, as I explained. So if the nerve is getting pinched continuously and from a long time, and it is not getting better with the rest, basic rest and physiotherapy, which is a natural mechanism of the body of healing of these slip disc or a stenosis, if the body is not helping you out with a regular mechanism or a natural mechanism for resorption of this slip disc, first thing is to confirm your problem for a proper diagnosis rather than just pulling it and ignoring things. It is highly indicated that you get an MRI scan done and consult your spine surgeon again to see and rule out if it is actually associated with your nerve compression in the spine. Is there any slip disc, or if it is just a muscular or a functional pain? So first thing is to diagnose, and then the further care will be taken care of. There are multiple modalities of treatment again available post diagnosis. Beyond pregabalin, there are multiple medications also available with the medicines as well as the physical therapies. There are further more mechanism or injection blocks. And the last stage, when we are exhausted with these mechanisms, there is a surgical intervention. But these can be taken up only after your diagnosis is made. Before the diagnosis, this all discussion is absolutely of no value. So if the pain is on and off mode, then an MRI should be done, right? Thank you, doctor. Thank you. Thank you, Linda. Thank you very much. Dr. Prashad Patel, you can talk to him. Unmute and talk, sir.
I'm Sir, sorry, sir. You're audible. your voice is not clear. No, sir. He has not unmute actually. I had just muted before your call. So just speak, No, sir. I'm able to hear. sir, please unmute and talk, sir. Your voice is not audible. Sir, your voice is not audible. Is it Please. audible now? No, sir. He has not unmute actually. Dr. Prasad, Sir, your voice is not clear. Dr. Prasad, your Unmute. voice is not audible. Please unmute yourself. There is a. Am I audible now? Yes, Hello? sir. Audible. Well audible. Sir. Well audible, sir. Go Am ahead. I audible? Yes, sir. Perfect. It's a very nice presentation by you, sir. Jain, sir. Thanks a lot for the guidance. Actually, myself, I've been suffering from this PID kind of picture. Since last 3 to 4 months, I've been facing this severe low back pain, but especially it is in a very low back region. It is not radiating to the lower limbs and all. Only after raising the left foot, I get little vertebral pain. It is not lower limb pain or radiculopathy like this thing. So MRI suggestive of L4, L5 disc herniation with the compression of the nerve root. And it's been there since last 2 to 3 months almost. So ideally, I've been trying stretching and physiotherapies and yogasanas and all that. What would you suggest? Sir, as you mentioned, it is becoming And a one more thing I wanted to ask: is there any role of chiropractic in this modality? okay, sir. So this is a commonly and very important question again, as you have asked, which will answer almost many other questions coming ahead. So lower back pain, as you mentioned, it is a mechanical as well as an arthritic pain. If I can understand, there might be some percentage of arthritis in your facet joints, possibly, which is affecting your lower back pain. But probably there is no significant impingement on the nerves. So when there is significant impingement in the nerves, you get a sciatic pain, which is a pain traveling around your The leg. pain, So you the cannot have pain like sciatic pain, it occurs but very intermittently and short lasting. It vanishes after stretching or some movement adjustments. It doesn't remain continuously. Yeah, the pain is only in parasacral or paravertebral between the two buttocks and maybe most of the times both buttock areas. And exclusively the pain is there in left paravertebral region whenever I try to raise the left limb only. But that pain doesn't radiate down to the hamstring or leg. Is it localized caused or it is it can be because an inflammatory or arthritic cause where there is some basic degeneration in your facet joints or the intervertebral disc joints. There might be some impingement because of the arthritis or the synovial fluid in the facet joints, which can intermittently cause a sciatic type of pain. okay. Again, MRI might be showing some impingement, but MRI showing there is a nerve root compression yeah. at L4, L5 level, but there is no any as such documented arthritic changes or facet joint involvement. To document the arthritic changes, it needs a very severe or significant arthritis in the facet joints. These are very smaller joints in the spine. Okay. To see, they are not like the hip or the knee joints for the arthritis to be visible very strongly. So these pains usually are kind of mechanical as well as some arthritic pain probably. Need to rule out the causes like inflammatory arthritis, including ankylosing or other type of inflammatory diseases. If there is at all any symptom of morning stiffness or stiffness after sitting for longer hours, and other thing is if you can try a chiropractor. Of course, there are some arthritic or the lower back pain mechanism which causes some tears of these ligaments. This can be treated with the chiropractor or the physiotherapy. Actually, we have been watching so many chiropractic videos on Instagram and YouTube, but we are not very sure whom to consult, whom to go, and who is the person really to go and see.
Are there any choices would you like to suggest of your knowledge that these centers are quite reasonable and advisable ones? Are there any? So there are multiple centers in around the city. So I would not like to name anyone, but I think you should need to find a good physiotherapist as well as your good spine surgeon or an orthopedic surgeon who can actually evaluate you well and invest if required any further investigations, as well as to treat you with some therapies. In case of the pain not getting better, there are modalities available to take it further, which are injectable modalities. When the diagnosis is not very sure, we have an option of injectable modalities, as we discussed, which are the epidural and facetal block injections. When the arthritic pain is significant and is not getting diagnosed, we have a modality of epidural as well as facetal block, which are not only therapeutic but also a diagnostic procedure. When the pain gets better with these injections, we have a sure diagnosis that your pain is coming out of these joints or the nerves. So with epidural block, how longer the pain gets under control? Sir, it is not about the longevity of the epidural block action. It is basically for the diagnosis. There is no length to it. It all depends on how severe is your nerve compression or your arthritic status, as well as the body process, how it acts faster for the resorption of all these diluted injectable material. Or actually, I'm asking this because I've been facing this problem since long back. Actually, it started this June this time, and earlier last 2015 also I had this kind of episode, but that lasted only for maybe 7 to 8 days, and now this time. So this time it has lasted for little more time. I'm taking rest for almost 15 days, but sometimes stretching and yogasanas relieves it. But what I mentioned, hamstring and leg pain, it keeps on intermittently shifting. Sometimes it is on right side, sometimes it is on left side, and it is not continuous. So this could be because of the muscle spasms. Surely, it might be a muscle spasm, but more of it looks like a spinal arthritis, and it might be an early stage of arthritis which needs to be properly evaluated. Or should I see a rheumatologist then? Rheumatologist is always after the opinion of the orthopedic, or you can consult a rheumatologist, but I don't think they have a... Actually, I've consulted a better orthopedician over here, one of my very senior most guide. According to him, he doesn't think that there is any radiculopathy or tingling, numbness, anything. Pain. So there are multiple causes of pains. So I think it needs a clinical evaluation more than just a history. It needs a proper clinical evaluation. I'm sure you might have taken an opinion of some of the good spine consultant and a physiotherapist. I think a further modality of treatment might be required if you have not taken. Might be chiropractor, physical therapy, or might be an injection procedure. Only after it can be a staged procedure. So actually, I want to go for sorry to interrupt you. Actually, few people are waiting to ask questions. Okay. Yeah. Thank you. Thanks a lot for your guidance. Reply on your. Thank you very much. Thank you. Mr. Arun Kumar, unmute and talk to the doctor, sir. Mr. Arun Kumar. Okay. Yeah. Now I can hear you. Yeah, you are well. या डॉक्टर विकास जैन, मुझे आपका वेबिनार पता चला और मैंने आपका फेसबुक पे मैंने देखा था। सर मुझे अभी मैं बैक प्रॉब्लम मुझे जो हो रहा है ना, तो बैक के नीचे जस्ट जो होती ना हड्डी, वहां पे पेन हो रहा है, प्लस उसके राइट हैंड साइड में जो ना हिप का जो होता है हल्का ऊपरी पोर्शन, उसमें होता है दर्द। तो मैंने इसका रिपोर्ट जो मैंने करवाया, तो रिपोर्ट में बताया है बैक मसल्स स्पाज्म जो होता है ना, ऐसा बता रहा है। और वो रिपोर्ट क्या, वो आपको मैं पढ़ के मैं बताता हूँ, 1 मिनट सर जरा। सर मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपका। जो आपने बताया है, इट इज अ वेरी रूटीन कंडीशन, और ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो बैक पेन के साथ आते हैं, उनके कंडीशन में ये जो लोअर बैक के मसल स्पाज्म्स दिखे जाते हैं,
हाँ और हाँ ये जो लोअर बैक के मसल स्पाजम्स होते हैं ज्यादातर मस्कुलर और पोस्चरल प्रॉब्लम होते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस की वजह से भी होते हैं, जो आई डोंट नो वेदर हाउ फ्रीक्वेंटली आपका एक्सरसाइजेस कितना हो रहा है। सो आई थिंक आपका एक्सरसाइजेस का जो शेड्यूल है एंड रेस्टिंग का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सो लोअर बैक के काफी एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपको इवन मेरा वेबसाइट पे या तो फिर आपके यूट्यूब चैनल्स पे काफी जगह मिल जाएंगे। एंड कुछ इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी शायद, अगर ये लोअर बैक पेन से लेग तक नहीं जा रहा है तो कोई रेड फ्लैग साइंस नहीं है और कोई दूसरे इंजरी, ट्रॉमा, इन्फेक्शंस का नहीं है, तो इट इज मस्कुलर पेन एंड ये रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड कुछ कुछ वक्त के लिए फिजिकल थेरेपीज एंड मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं मोस्टली। तो सर मैं बताना चाहता हूँ, मुझे प्रॉब्लम ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है। जब मैं चलता हूँ ना तो ये प्रॉब्लम जो है ना मुझे मतलब बैक में होने लगता है। अभी जैसे ये डॉक्टर का जो है ना रिपोर्ट इसमें बता रहा है लॉस ऑफ लंबर लॉर्डिसिस ये काफी नोटेड कॉमन प्रॉब्लम है। दिस लॉस ऑफ लंबर लॉर्डिसिस इज जस्ट अ मस्कुलर स्पाज्म एंड इट विल बी सीन इन ऑलमोस्ट ऑल द एमआरआई जितने भी हम करते हैं, क्योंकि ये लोअर बैक का तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। मतलब ये जैसे कि मैं बैठा रहता तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आता है, मैं सोता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं आता है। अभी मैं चलने लगता हूँ तो 5 से 10 मिनट के बाद में मुझे हो रहा है। तो मैंने एक कायरोप्रैक्टर से मैंने दिखाया था तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट वगैरह किया। लेकिन मुझे पहले से दर्द में आसान हुआ है, लेकिन अभी 2-3 दिन से कुछ रूटीन वर्क के कारण मैं मतलब वो ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहा हूँ। तो आज मुझे 2 दिन से फिर से मतलब मैं चल रहा हूँ। तो पहले जैसे हार्डली 5 से 10 मिनट में चलता था तो मुझे दर्द होने लगता था, लेकिन अब भी जो है ना 15 से 20 मिनट में चलता हूँ, हाफ एन आवर चलता हूँ, तभी जाके मुझे दर्द हो रहा है। मुझे अभी क्या करना चाहिए सर? सो ये बेसिकली एक्सरसाइज रिलेटेड है, आपका पोस्चर रिलेटेड है। आपको एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो लोअर बैक के रेगुलर एक्सरसाइजेस और उसकी स्ट्रेचिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो लोअर बैक के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो ये ज्यादा मतलब अभी सीवियर प्रॉब्लम तो नहीं है सर? सीवियर नहीं है ना, मैंने वही आपको सबसे पहले समझाया कि ये सीवियर नहीं है। तो अभी इसमें मुझे कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए क्या? सर वो मैं अभी वीडियो पे तो नहीं बता सकता हूँ, ये आपको मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा एक्सरसाइजेस का। या एक बार मैं क्या पर्सनली आपसे 1 to 1 मतलब ऐसा मैं कंसल्टिंग कर सकता हूँ क्या? कैसे मुझे पता चलेगा सर कहाँ पे आपका मतलब क्लिनिक है? वीडियो के एंड पे दिखाई देंगे सर, वीडियो के एंड पे। सॉरी सर, शेयर कर देंगे सर, डिटेल्स हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे आपसे। ओके 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 सर, ओके ओके सर, Thank you, sir. या थैंक यू सर। Thank you very much. Next. Sir, is there any question from the group actually? Anybody wants to talk to doctor? Quickly, you can ask now because already getting late actually. Mr. Sugas, you can, if you want, talk to the doctor quickly. Yeah. Hello, doctor. Am I audible? Hello? Yes, ma'am. Yeah. Hello, doctor. What I wanted to ask, actually, it is a repeated question. Actually, it is the same. I have an L4, L5 prolapse. Again, it's the same. And it's the same. Means a lot of people have asking the same questions. For me, it is like L5, S1 disc posterior bulge. And it is grade 1 and L5 over S1 vertebrae and mild facetal atrophy. It's a medical terms which I don't understand well. But my age is 43, and actually means like I work and what is happening is currently I've taken physiotherapy and everything. Means till the time physiotherapy was on for 11 sessions, I was feeling better. But like again, one person has already said, means after 20 minutes of walking, again the pain has started. So my just one ask is like, I don't want to go for any surgery. So is it that with only exercises it can be cured? Like, is there a chance or no? Surgery has to be done in certain cases because I want to avoid surgery totally. Sorry to ask you, madam, but can I know your weight? My weight is 67 kgs. Okay. So you're not obese, you're little slightly overweight? Yeah, slightly overweight. And height is 5 feet 4 inches. Yeah. As per your height, it is slightly overweight. It should not be overweight. You have get a sciatic pain also. You get a pain throughout the legs. So your cause of pain is highly specified that it is a listhesis, spinal listhesis, which is the bone of the spine, which is transmitted forward
and like this, as I explained, the bone is slipped forward and it is impinging on the nerve. So the cause of pain is quite nicely specified on your MRI, and there is a nerve impingement as well as the facetal arthritis. So at your age, many a times we get away without the surgical treatment also. So you need some good spinal flexion exercises. You can ask your physiotherapist to teach you some good spinal flexion exercises, no extension exercises, because every extension in the spine increases the slippage of the tendency of the slippage more forwards, which is already there in your spine, and it further increases the facetal arthritis and the arthritis in the spine, the intervertebral disc. So your spinal nerve compression can be protected. You need a bracing, a proper customized or a well supported bracing to your lower back, which will prevent a further increase in the slippage of your the bones, which is happening at L5 and S1. And some part of to it, the weight loss will help you. Might be around 3 to 4 kgs of weight loss will also help you to reduce your problems and prevent your sciatic pain. Physical therapies intermittently can help. Some medications are available, which includes pregabalin and some muscle relaxants, which might help you to reduce the inflammation at your nerves and carrying it forward to a longer run. Next stage, when you are exhausted with all these procedures and you want to get away and still you don't want to go ahead with the surgical intervention, there are blocks, injectable blocks available, Okay. which helps to a good extent. It might be a longer run treatment, like some people get away with pain for 1 or 2 years or lifelong, or some people fall back with pain again in few months. It is all upon the personality and the severity of the stenosis or the nerve root compression. The next stage is obviously the surgery. If the clinical scenario of yours is matching with the MRI, then finally the surgery takes place. Doctor, I am her husband speaking. Just wanted to know that the physiotherapist has told her to take